Hello everybody, welcome to iExamB's Legal Bee. This is Amrita, your law faculty here at iExamB. Embrace the iExamB learning experience with us. If you're preparing for any competitive examinations after your law, then definitely you are at the right place. At iExamB, we help you prepare 50% faster. We have online courses available for various examinations where our law officer exams in banking sector, regulatory bodies, SEBI, RBI, IBPS and whatnot. So you check out all the examination courses available. इन कोर्सेज के आप डेमो भी एक्टिवेट करके देख सकते हैं. In case of any queries, you can reach out to us by writing us an email on hello@iexamb.com. You can also call us on the number 9205524028 and don't forget to subscribe to our YouTube channel Legal Bee. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट IBPS SO लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन. दिस इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू द लॉ ग्रेजुएट्स. दिस इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल फ्रेशर्स स्पेशली. ये हर साल आती है. इस साल भी IBPS SO लॉ ऑफिसर स्केल 1 एग्जामिनेशन होगा and that will be happening in the month of November. So that all the details I am going to tell you about this examination in this video, and also कि आपने ये examination क्यों देना चाहिए, what are the perks, what is the job profile and all. So don't forget to subscribe to YouTube channel Legal Bee. ऐसे ही सारे वीडियोस के लिए कंटेंट वीडियोस भी हम लोग देते रहते हैं. डिफरेंट सीरीज आर देयर. यू कैन चेक आउट आवर प्लेलिस्ट फॉर ऑल द डिटेल्स. This is the tentative calendar of online examination of RRB and PSBs. ये 24-25 का कैलेंडर है जो मैंने शेयर किया है यहाँ पे. एंड इसमें अगर आप जाके यहाँ पे देखेंगे स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, जो लॉ ऑफिसर्स हैं IBPS SO लॉ ऑफिसर, ये आता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के कैटेगरी में. द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फॉर दिस इज कंडक्टेड ऑन 9th is going to be conducted on 9th of November 2024 this year. हर बार ये एग्जामिनेशन दिसंबर में होती है. दिस टाइम इट इज इन नवंबर. मेंस एग्जामिनेशन ऑफ इट इज टू बी कंडक्टेड इन ऑन 14th of December 2024. The tentative schedule of 2023 examination also I have shared here with you, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरीके से ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है एंड व्हाट इज़ द टाइम गैप. सो इफ़ यू सी, अगस्त में नोटिफिकेशन आया था 2023 में. अगस्त में नोटिफिकेशन आया था एंड दिसंबर में कॉल लेटर्स आए थे. प्रीलिम्स दिसंबर में ही हुआ था एंड जो आपका मेंस एग्जामिनेशन है वो जनवरी में हुआ था. एंड फेब्रुवरी में आपका रिजल्ट आया था मेंस का. देन इंटरव्यू वाज कंडक्टेड इन फेब्रुवरी मार्च एंड रिजल्ट वाज फाइनली वेरी रिसेंटली डिक्लेयर्ड ऑन 1st of April 2024 तक सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया था. सो दिस इज द शेड्यूल विच इज डन एवरी ईयर. सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरी अकेडमिक ईयर. दिस इज टेंटेटिवली यू कैन फाइंड आउट. आपका नोटिफिकेशन जुलाई के आसपास आ सकता है. सो नाउ व्हाट अबाउट योर प्रेपरेशन? Start your preparation immediately. This is an excellent opportunity. If you are a fresh law graduate or you are going to graduate now also, then definitely you should prepare for this examination. I will give you some reasons that why you should prepare for this examination. It is a good opportunity for fresh law graduates as no experience is required. Directly you get a job, that too in a stable bank. Salaries around 60,000. Basic salary आपका जाता है around 35,000. Perks of a settled job in banking sector is what is something really good and gives stability to you in life. तो अगर आप ऐसा कोई stable job चाहते हैं, definitely you should try for this examination. Exam has moderate level of difficulty, so you can cater this examination and qualify it if you use the right strategy and get the right preparation in the right direction. So definitely iExamB is there to help you out. आप हमारे सारे कोर्स डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं. iExamB के वेबसाइट पे जाके आप कोर्स, जैसे मैंने आपको कहा, डेमो भी डाउनलोड करके, डेमो भी एक्टिवेट करके देख सकते हैं. दिस रिक्रूटमेंट कम्स एवरी ईयर. सो इफ़ यू ट्राई फॉर इट विद इन दैट एज लिमिट, ऑब्वियसली आपकी 30 ईयर्स की एज लिमिट होती है, तब तक आप ट्राई करते रह सकते हैं. एंड आप एक स्टेबल जॉब, बैंक जॉब में, लॉ ऑफिसर की जॉब एवरीबडी नोज इज़ अ वेरी नाइस एंड अ वेरी सेटल्ड जॉब. व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी? एज लिमिट इज़ 20 to 30 years. Bachelor's degree in LLB is required and there should be enrollment as an advocate with the
bar council. This is what is the eligibility. Job profile, legal representative of the bank. Law officers are the legal representatives of the bank. They are going to handle all the problems, all the legal issues of the bank. They will ensure that all rules and regulations laid down by the RBI are followed by the bank. Compliance of all the legal rules and regulations is a responsibility that is shouldered on the law officer. You may think that advocates are there on the panel of banks. Then what is the job of law officer? लॉ ऑफिसर का काम होता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ensuring that all the rules and regulations laid down by the RBI are followed by the bank. Compliance होना चाहिए. Preparing legal documents of the bank and also coordinating with the advocates on the panel of the bank. Handing over all the necessary documents, drafting, everything, negotiation on the part of bank, everything has to be handled by a law officer. Giving legal opinion on matters. If there is any procedural lapse in the bank, if there are some loopholes, providing solution for it. So it is an interesting job. बहुत लोग कहते हैं कि boring job है, but ऐसा नहीं है. If you will see, it's quite challenges are there for every bank. And especially the participating banks in IBPS, you can check out the list of all the participating banks. All are very famous nationalized banks. So ये सारी list भी आप IBPS के website पे जाके check कर सकते हैं. So the journey as a law officer in IBPS is going to be very challenging and interesting. At the same time, it will give you stability. So do check out the details of this examination. Stay tuned to LegalBee and do cater this examination. If you have any queries, we are there to help you out. Don't forget to subscribe to LegalBee.